अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी जो मेरे पास बॉक्स है ये बॉक्सीचार्म की तरफ से आया है और ये जो मेरे पास चीज़ आई थी, आई पेड $9 समथिंग फॉर दिस स्पेसिफिक बैग एंड इट हैज़ 3 ब्रशेस। ब्रांड जो है इट्स अ डिफरेंट ब्रांड, आई नेवर बॉट एनीथिंग फ्रॉम देम। सो दिस इज सम काइंड लाइक Spanglish or something like that. I don't know. I'll mention everything in the description box so you can check. It's really pretty, like purple clear bag. मेरा ख्याल से ये ट्रैवल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि मैं यूजुअली जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं इस तरह के बैग्स जो है वो यूज़ करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी टू सी व्हाट्स इनसाइड, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये जो है इसके अंदर ये एक पैलेट है विच यू कैन check my Instagram brushes है 3 travel like eyeshadow brushes because the eyeshadow palette is साथ में primer है and this cute little thing it has some jewelry and that's the earrings. Wow, this is so pretty, heart ones, and they're really good quality. I really like them. I'm gonna wear them in some pictures and I'll post them on Instagram, so make sure you watch, or I might give it to someone. I don't know like what I'm gonna do, but I bought it because it was on sale and it was really good price, so I'll mention everything in description box, so make sure you check that if you're interested. These are the ads-on products. मैंने first time ये खरीदी है, इससे पहले सिर्फ Boxycharm का जो है सिर्फ box ही आता था। So this one is Kate Somerville. I just love this brand because this brand has a lot of great products. मेरे पास already काफ़ी सारी चीज़ें हैं। So this is a soothing cleanser जो कि मैंने कभी पहले try नहीं किया, so it's my first time I'll be trying this and then I'll post my reviews inshallah on my YouTube channel later on. The bottle is really pretty. I mean the tube, my daughter actually loved it. So this one you can use AM PM apply on a small amount on a wet skin and massage for 30 seconds and rinse gently, pat dry. So yeah, अभी इसको मैं इसको fragrance भी check नहीं कर सकती, but anyways I'm gonna use it. So the next product we have is it's a the butter thing. I'm gonna show you exactly what this says. It has AHA glow butter and इसका भी कुछ और मैं गोल्ड और समथिंग लैंग्वेज पता नहीं क्या लिखी हुई है। तो वेल एनीवेज जब आप ओपन करते हैं तो ये बड़ा लग्जरी सा एक जार है एंड which is really nice and it's a good quality though. So this comforting super firm infused butter leave skin cleansed with a healthy glow. इसे भी बस मसाज करना है ड्राई स्किन के ऊपर, रिंस करना है वार्म वाटर के साथ and cotton pad dry, wipe gently over face and eyes. So I'll be using this. Do not eat, it says. So make sure you check that. So it's a very like creamy buttery situation going on, so like we need to rinse it afterwards, जो मैं बाद में कर लूँगी, but फिलहाल I just want to show you like how it feels. So it's actually it looks great right now and my hands looks a little sticky. So the next product we have is Pure Heal. ये भी जो है स्लीपिंग मास्क है। आई लव यूजिंग स्लीपिंग मास्क बिकॉज समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्लीपिंग मास्क की, और इसमें मेंशन किया हुआ था कि इसमें जो है रियल रोज़ पेटल्स हैं, तो रियल रोज़ पेटल हो, मैं कोई चीज़ ऐसी छोड़ती नहीं हूँ बिकॉज रोज़ water, rose petals, they are great for your skin. So it's like really pretty pink looking jar. Luxury packing लग रही है, like एक अच्छा high end brand जो होता है, और lid लगा हुआ है and then the thing is inside the mask is basically it's similar to my fresh mask which is rose petals. That one is also like made with the real rose petals. That's a great mask. It's a great source of moisturizing. I love using that especially in summer and winter, actually sorry winter, क्योंकि मेरी skin अक्सर बहुत ज़्यादा dry हो जाती है. It came with a spatula which I like because you're not going to dip your hands inside, so yeah, that's great and it's daily skincare, so you can use it every day.
so rose petal. This specific thing, okay, I got it for my eyebrows because I like doing my eyebrows at home. I usually don't like going to the salon, especially for my eyebrows, because it's a lot of like time consuming thing. तो खैर मैं इसको जो है रिव्यू करूँगी अपने टिकटॉक पे और अपने इंस्टाग्राम पे, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया. नेक्स्ट वी हैव दिस Zoeva brush and I really like this brush. Basically मेरे पास Zoeva किसी ज़माने में था, उसके बाद पता नहीं क्या किया मैंने शायद किसी को दे दिया था. ये क्या किया था? Well, it's a petite face finish brush और it's a great quality, no doubt. They have nice, but this was actually on sale. तो जब सेल पे चीज़ होती है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ. So ये ब्रश जो है ये फ्लैट किस्म का है. इससे आप पाउडर फिनिश ब्रश है तो ज़ाहिर है पाउडर लगा लें, कुछ भी लगा लें. मे बी जो आपका जो सेटिंग पाउडर होता है वो लगा लें. So it's great. मेरे हाथ के साइज़ का है. It's a good quality brush और it's a full size brush and it was on sale. I'm gonna mention everything in the description box, the prices, but the quality is actually great and I love it. So next this is a red pouch. So basically ये है brush set. It's a travel brush set. So मेरे पास और भी बहुत सारे brushes हैं, like बहुत अच्छी quality के मैं यूज़ करती हूँ. This one I got it for to give it to someone. Like मैंने बस क्योंकि मैं पाकिस्तान जब जाती हूँ तो मैं लेके जाना चाहती हूँ कुछ ना कुछ किसी के लिए. So मैंने ये लिया. अब travel डिपेंड करता है किसके पास ये जाएगा. I'm not sure, but I actually really like the golden brushes inside. इसमें फेस ब्रशेस भी हैं और आई शेडो ब्रशेस भी हैं. और ये जो फेस ब्रश है बेसिकली दिस इज़ लाइक अ कॉन्टूर ब्रश टाइप, बिकॉज ये फ्लफ़ी नहीं है, फ्लैट सा है, लेकिन इट्स ग्रेट फॉर कॉन्टूरिंग एज आई कैन सी. तो ये भी फुल साइज ब्रशेस हैं. इट्स अ गुड क्वालिटी. आई मीन आई लाइक द ब्रिसल्स, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ. तो दे गोना वर्क फाइन ऑन द स्किन. बट मैं इसको ज़ाहिर यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैंने इसको गिफ्ट करना है. तो बाकी जो आई शेडो ब्रशेस हैं ये भी सेम क्वालिटी हैं, फुल साइज ब्रशेस हैं, परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग एंड दे हैव लाइक सॉफ्ट ब्रिसल्स. तो आई होप कि ये ठीक से काम करेंगे क्योंकि चीज़ें उन्होंने काफ़ी बेहतर मतलब कंपनीज़ की ली हुई थी, ब्रांड्स की ली हुई थी जो सेल के अंदर थी. सो वेल मैंने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम थिंग. सो लाइक आई डोंट नो. एनीवेज इसको वापस मैं रखूँगी बिकॉज मैं इसको ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ. पाउच बड़ा अच्छा था, साफ़ सुथरा सा लेदर, फॉक्स लेदर, बट इट्स लाइक गुड क्वालिटी थिंग. इट्स नॉट समथिंग लाइक चीप, सो विच इज़ ग्रेट. सो बाकी सारी चीज़ें मैं सेट करके रखूँगी. So this is okay. It's a teamy bloom. Basically I'm a tea person, so I love using such kind of teas जिसके अंदर थोड़ी सी sweet भी हो, थोड़ी सी floral सी fragrances आ रही हो, maple leaf type, those things. So ingredients इसके बड़े अच्छे हैं, directions सारी पीछे mention की हुई, exactly how you use it. So आप इसको जो है देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर. तो I'll make this tea. I do have David tea. So okay, so this Juice Beauty thing, it's eye cream. So I do have a small one. This is a big size. So maybe actually one of my favorite eye creams. I like using eye cream, especially in winters. आपको सारे ही वेदर्स में वैसे यूज़ करना चाहिए, नहीं कि आप समर में यूज़ नहीं करें. मेरे पास छोटा वाला इसका वर्जन है, ये फुल साइज़ और ये सेल पे है, तो विच इज़ ग्रेट. तो अभी जो इसका जो पंप है, यहाँ से हम इसको पंप करते हैं और फिर इसको आंखों पे मसाज करते हैं, लाइक आपके अंडर आइज़ के ऊपर. तो विच इज़ ग्रेट. सो आई एम गोना मेंशन एवरीथिंग इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैं वीडियो भी लिंक में दे दूँगी जिसमें आप मुझे देखेंगे यूज़ करता हुआ इसका छोटा वर्जन. अच्छा, दिस स्पेसिफिक थिंग आई वाज रियली एक्साइटेड टू बाय. ये सीरम है, सीरम बेस्ड ब्लश है. सो इट वाज ऑल ओवर टिकटॉक. तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ बिकॉज मैंने इसको वैसे ख़रीदा नहीं था. अगर सेल पे नहीं होता मैं कभी नहीं लेती, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम जस्ट नॉट इनटू सीरम ब्लशेस. और वैसे भी खैर मैंने लिया इसलिए था बेसिकली ये सोच के कि अगर हमारे यहाँ पे वेदर चेंज हो जाएगा, विंटर आ जाएगा, खुल जाओ, ये खुल नहीं रहा था, तो मुझे सीधे तरीके से खोलना पड़ा. मैंने सोचा मैं शायद ऊपर से उसकी जो है ना वो नहीं तोड़ूंगी, जो प्लास्टिक सा लगा होता है. वेल आई हैड टू. एनीवेज, सो मैं ये बता रही थी कि मैंने विंटर में इसे एक्चुअली ख़रीदा इसके विंटर में यूज़ कर सकूँ बिकॉज इट हैज़ सीरम, और सीरम जो है विच इज़ ग्रेट.
So we're gonna grab the scissors. Bear with me, I'm gonna open it because it was like, you know, proper plastic से seal था. खैर, तो अच्छा ये जो color है, it's a coral color, really pretty. I was a little nervous when I applied on my hand because I don't know, क्योंकि मैंने लोगों को देखा TikTok वगैरह पे, तो वो तो बहुत fair complexion के होते थे, it looks really great on their skin. So this one has little like dark peachy coral color, और it literally feels like a serum, जैसे आप serum regular serum apply करते हैं translucent, like, you know, without any color. बस इसमें हल्का सा जो hint है, you won't be able to see here मेरे हाथ तो क्योंकि इतने वो fair नहीं है, तो but after foundation maybe it looks better, but you're gonna see me using it on TikTok and Instagram again, so make sure you follow me there too. तो yeah, इसके बाद जो बाकी की प्रोडक्ट्स हैं, अब इनमें ये एक और Zoeva brush है, ये भी it's a big fluffy brush basically. It's also a finishing brush type thing, but it's a little bigger than the other. Shape दोनों की same है, which I was a little disappointed. मैंने सोचा कि मुझे लगा था शायद एक राउंड होगा एक फ्लैट होगा, but दोनों फ्लैट थे but साइज में डिफरेंट थे. तो वैसे लेंथ वगैरह सबकी सेम है, बट ये जो बस ऊपर के जो ब्रिसल्स हैं ज़रा थोड़ा सा फ्लफी और लेकिन फ्लैट, सो एज यू कैन सी. बट अगेन इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ब्रश. तो मेरे पास था नहीं कुछ भी ऑप्शन इनके पास और थी नहीं ब्रशेस की, सो मैंने कहा चले हमने ट्राई करना ना बेसिकली, और मे बी मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ, सो आई जस्ट गॉट इट फॉर माई सेल्फ. तो अभी बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं, this one right, okay, this is a battery massager thing. Again, I'm into massagers, jade rollers and rose quartz and all that. तो ये मैंने इसलिए लिया because it has a battery. So मैं ट्राई करना चाह रही थी कि क्योंकि मेरे पास जो जेड रोलर वगैरह वो तो रेगुलर रोलर्स होते हैं ना, यू नो, यू जस्ट होल्ड देम एंड अप्लाई ऑन योर फेस, रोल करते रहो सीरम वगैरह लगाने के बाद. दिस वन इज़ अ लिटिल डिफरेंट, इट हैज़ बैटरी और रोज़ क्वार्ट्ज है, तो यू नो आई एम ऑल अबाउट रोज़ गोल्ड. इट्स अ वेरी प्रिटी रोज़ गोल्ड कलर, ऑनेस्टली आई एम लविंग इट. आई विल डेफिनेटली यूज़ इट, सो मेक श्योर you watch full video. Alright, so this one right here is a new product which I have never used, और ये खाजा की है. खाजा और खेजा, और KAJ क्या कहते हैं इसको, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, but this is actually a primer, like, you know, the regular primer, but this one has a little bit क्या कहते हैं, जैसे बॉडी स्प्रे होता है, बॉडी क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं. सो इट्स ड्रीम पफ. सो आई बिलीव कि जब इसको आप स्प्रे करते होंगे हाथ पे तो ये शूम करके निकलता होगा, और मे बी थोड़ा सा फोमी भी हो, बट आई एम नॉट श्योर. बट दिस इज़ सीरम एंड आई विल डेफिनेटली post my reviews after using it few times and after doing makeup. So अच्छा, ये है Saturday Skin का spray. I really like this brand. Basically, it's underrated brand. I really love their moisturizer, which I use. That is the same bottle as this one. This is facial mist, face spray. So मुझे basically I'm all about I'm so much into like facial mist. मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है अब सबकी वीडियोस बनाऊंगी. It's the same bottle like the moisturizer. Moisturizer होता तो मैं moisturizer भी जो है वो buy कर लेती, because I just really love this brand. पहले मैं यूज़ नहीं करती थी इसे, फिर किसी ज़माने में मुझे मौका मिला एक्सप्लोर करने का. I used it and I actually really liked it. So well, I have this one and mists are great for your skin to, you know, उसको hydrate करने के लिए हर वक्त. तो उसके बाद ये है जी hair brush. This one is really pretty, travel Detangler brush. मैंने recently जो है Detangler brush लिया था, same brand का, but that was just a brush, but this one has a cover. तो ये ट्रैवल के लिए बेस्ट है, अगर आपने अपने बैग में डालना है या कार में रखना है या कहीं भी, तो इट्स ग्रेट बिकॉज इट हैज़ अ कवर. सो ये आपकी जो चीज़ें जो है वो बाकी की रूम नहीं करेगा. इट्स जस्ट गोइंग टू प्रोटेक्ट योर अदर स्टफ
from getting scratchy and all that. तो I really like it. Basically मेरी बेटी को brushes जल्दी पसंद नहीं आते ना, तो मुझे उसके लिए फिर नए नए तजर्बे करने पड़ते हैं. So I just bought this one this time because the other brush works really great on her scalp. तो उसको वो सही लगा था, इसलिए मैंने फिर ये वाला ख़रीदा. Then we got a lip liner. This is a new brand. I never tried this one. This is a new and the color I saw जब मैं ख़रीद रही थी तो मैंने कलर देखा, बड़ा मज़ेदार सा लगा. मैंने कहा भाई ये तो लेने वाला कलर है because मैं I'm more into like nude. But look at the pencil. It's so pretty. It's so like it's a cute kind of thing. I never saw such pencil before. You know, इसका जो lid है वो ऐसे softly open होता है. It actually looks like a pencil. So it looks like really luxury because the texture is really great and the color is awesome. It's so pretty, pinky, corally, peachy color. I really like it. It's perfect for everyday use. So मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. I mean मैं definitely try करूँगी. नीचे से roll होकर निकलता मैंने try नहीं किया because I don't want to ruin it. So and it looks long lasting. So it's pigmented. It was so smooth. I just swatch it and I loved it. So I bought these MAC lipsticks and these are full size lipsticks, but unfortunately this is the same, these are same shades. तो मैं expect नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि शायद same shade के same color के different shades हैं, you know what I mean, if that makes sense. तो but anyways same color की दो lipsticks आ गई हैं मेरे पास. अब क्या कर सकते हैं, but the color is really pretty. It's like magenta type color, वो जो थोड़ा सा purplish होता है. But honestly same color. I don't know why. You should have better like add two different shades from the same color, if you know what I mean. खैर ये मैं रखूँगी गिफ्ट वगैरह करने के लिए. It was on sale so I bought it because who cares about colors. अब किसी को देना तो वो तो यूज़ कर ही लेंगे ना, उनको MAC की लिपस्टिक मिल रही है. खैर अभी उसके अलावा ये जो है, अच्छा ये क्या है, इसको हम खोल के देखेंगे because I was so excited to get this one and I'm extremely surprised and happy because this is Natasha the Nuna palette and oh my god, look at this gorgeous palette. I thought कि ये $33 वाला mini palette है, but no, it's not mini palette. ये I think it's about 50 something or maybe 60 if I'm not wrong. I'll double check the price. I'm gonna match with the other one जो मेरे पास mini palette है. ये mini palette है जो black वाला है, ये मैंने recently लिया था Sephora से and this is for $33 I think, but the size is different. So it has same like amount of shades, 5 each. But this one is bigger and I just love them. Honestly, I was so excited. I'm like, wow, I was not expecting to have this palette for this price. I mean, it's a great product. And this is the daily bath scrubber. I just love this one because I had to have this. मेरी बाजू जो है बहुत अच्छे से भी काम नहीं करती. My shoulder is still having issues, so I got this one and because you know you want to clean your back as well, and it's so squishy, so soft, and but it has that scrubbing thing, but cleaning में मेरे ख्याल से बेहतर होगा. And it has two handles, दोनों तरफ से आप पकड़ के जो है बैक की तरफ ले जाके and then scrub. So yeah, that's what I like about it. So I am going to use it in the shower and that's all. अभी भी मैं dig out कर दी कि शायद कुछ और भी निकला है, but anyways that's all for today. I hope you like the video. Make sure you subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram, TikTok and other platforms and on Facebook page. And thank you so much for watching. I'll see you guys soon. And हाँ, जाते जाते एक और बात कहूँगी कि सब्सक्राइबिंग फ्री है, वो कर दिया करें. ऑनेस्टली कुछ नहीं जाएगा आपका. तो बाकी जो रिव्यूज़ हैं मैं बाद में पोस्ट करूँगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.